Hello there, beautiful people. How are you? Okay, now we are going to deal with the last chapter of PT2 portion, that is chapter number 8 from your supplement reader, The Hack Driver. Okay, it is written by Sinclair Lewis. Who has written this story or this part? By Sinclair Lewis. Okay, the hack driver. Hack means a carriage. Okay, a carriage, एक गाड़ी, एक प्रकार की गाड़ी जो carriage है, जो घोड़ा चलाता है. Okay, तो घोड़े से चलाते हैं. Sorry. So that is called the hack. So this is a story about the hack driver. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? Okay, there was a young lawyer and he visits a village to serve summons on Oliver Lutkins. Serve summons means summon कौन भेजता है? कोर्ट से समन आता है, राइट. समन मीन्स आपको बुलाते हैं, बुलावा आया है कोर्ट से. सो दिस लॉयर ही वॉज वर्किंग एज अ ट्रेनिंग. हिज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ डिग्री ही वॉज ऑन द ट्रेनिंग जॉब. ओके, एंड ही गॉट द ड्यूटी ऑफ समनिंग पीपल. लोगों को कोर्ट की तरफ से बुलाने का काम वो करता था. ओके, सो ही वंस ही गॉट द जॉब ऑफ समनिंग Mr. Oliver Lutkins, okay, and he visits his village. But there he met a person. He was the hack driver, okay, and this hack driver promises him to find or to search to look for Mr. Lutkins, because he knows Mr. Lutkins over there. That hack driver, he knows him. So does he find him, and who is Mr. Lutkins? So we have to find it out. So let us start with the lesson. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. Okay, this lawyer, he had finished his graduation with honors, and he started working he had started taking his training, but not to prepare legal briefs. He had started training his training, but not in preparing legal briefs, but to serve summons. लोगों को बुलाने का काम उसको दिया गया था ट्रेनिंग के तौर पे, and he started doing that job, and he treated it as a cheap private detective job. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Summons किसको भेजता है कोर्ट? चोरों को, क्रिमिनल्स को बुलावा आता है ना, कि आपको बुलाया है, आपकी पेशी है, आपको कोर्ट में आना है, आपको गवाही देनी है, आपको ये करना है, वो करना है, एंड ऑल दोज लीगल थिंग्स. सो वेयर दीज क्रिमिनल्स माइट बी स्टेइंग इन द डार्क एंड शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, तो वहाँ उसको जाके बुलाना पड़ता था, एंड ही हेटेड दिस जॉब. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. बहुत सारे चोरों ने और criminals ने मुझे पीटा भी है. So I hated this unpleasant work and the side of the city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. So one day this lawyer was very happy because he got a chance to move out of the city at a village place which was 40 miles away from that city. Its name was New Mullion, okay, and he was very happy क्योंकि पहली बार उसे शहर के बाहर जाना पड़ा, जो उसे बहुत अच्छा लगा. ओके, एंड ही हैड टू serve summons on a man whose name was Oliver Lutkins, and they needed this man as a witness in a law case, and many a times court has served summon on this man, but he had ignored all their letters. So personally he had to go and he had to serve summons on him.
When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. उसको बहुत दुख हुआ जब वो वहाँ पे वो गाँव में गया, because he thought that place might be very beautiful, but it was not at all like that. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. So वहाँ पे गया तो उसको what did he see? He saw rivers of mud. हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, कीचड़ की नदियाँ बहती थी वहाँ पे. एंड ही सॉ रोज ऑफ शॉप दुकानें थी लाइन में, बट हार्डली अ शॉप वॉज पेंटेड. इट वॉज पेंटेड, ईदर इट वॉज पेंटेड विथ सार ब्राउन कलर और इट वॉज नॉट एट ऑल पेंटेड. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. So उसको अच्छा क्या लगा उस जगह का, तो एक डिलीवरी मैन था स्टेशन पे. ही liked that man, I'm sorry. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. तो उसकी उम्र कम से कम 40 साल की होगी. उसका फेस रेड था, बहुत चीयरफुल था, हैप्पी था. एंड थिक अबाउट मिडल मीन्स उसकी हेल्थ जो थी अच्छी खासी थी, नॉट टू थिन नॉट टू फैट और हेल्दी. So his working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. So बहुत friendly mannered था, बहुत easily बातें करता था, लोगों से help offer करता था, ऐसा था वो इंसान. I told him, I want to find a man named Oliver Lutkins. So this lawyer inquired that man that he was supposed to find a man called Mr. Oliver Lutkins. So he said, Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? So he said, oh, Lutkins, he was here an hour ago. 1 घंटे पहले यहीं पे था. उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता ही रहता है. आई नो ही वॉज सपोज टू स्टार्ट अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्ज शॉप. फ्रिट्ज का जो शॉप है वहाँ पे वो पोकर गेम स्टार्ट करने वाला था. आई विल टेल यू अबाउट हिम. इफ़ यू आर नॉट इन अ हरी आई कैन हेल्प यू लोकेटिंग लटकिन्स. मैं आपको हेल्प करता हूँ. Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. So this lawyer didn't reveal for what purpose he had come. So he said, yes, I want to catch him as soon as possible because I have to catch the afternoon train back to the city. I will tell you what. I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास हैक है, मैं वो लेके आता हूँ. हम दोनों उस पर राइड करके पूरी गांव में उसको ढूंढेंगे. एंड आई नो वेयर ही हैंग्स आउट. और मुझे पता है कौन कौन सी जगह पे वो जाता रहता है. सो ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल. आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो. सो मुझे बहुत खुशी थी कि ये बंदा इतना फ्रेंडली कैसा है. और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर मेरा पैसा जाएगा तो भले इंसान के पास जाएगा जो मुझे हेल्प करने के लिए इतना उतावला हो रहा है. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. लॉयर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन. आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो उनमें एक बार्गेन हो गया कि 1 घंटे के लिए $2 वो पे करेगा. जितना भी वक्त लगेगा उसके लिए 1 घंटे का $2, उस हिसाब से उसको पैसे देने पड़ेंगे. एंड दिस पर्सन, दिस डिलीवरी मैन, ही ब्रॉट अ हैक फ्रॉम हिज अपने घर के अंदर से वो हैक लेके आए. आई एम सो सॉरी. He remarked, well, young man, here's the carriage. And his wide smile made me into an old friend. उसकी एक मुस्कान ने मुझे ऐसा फील करा दिया कि ये मेरा कोई पुराना दोस्त है. चलो हम बैठ के राइड करते इस पे और ढूंढते उसको. So, well, young man, here's the carriage, okay? These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. ये villagers इतने friendly होते हैं कि उसने मेरे टास्क को खुद का टास्क बना दिया Oliver Lutkins को ढूंढने के लिए.
He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect money, some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. मैं आपको एक बात पूछूं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों ढूंढ रहे हो लटकिन से? हाँ, शायद आपको उससे पैसे की ज़रूरत होगी, पैसा चाहिए होगा उससे। ये जो लटकिन्स है ना, ये किसी को पैसा देता नहीं है, लेता है लेकिन देता नहीं है। मैंने एक बार उसके साथ पोकर गेम खेला और मैं इतना बुद्धू हूँ कि उसके साथ मैं पोकर क्यों खेला, बाद में मुझे रिग्रेट करना पड़ा। एंड उसको मुझे 50 सेंट, देन ही हैज़ टू पे मी 50 सेंट्स एंड ही हैज़ नॉट रिटर्न मी माई 50 सेंट। आई वॉज सो फुल टू प्ले विथ हिम पोकर। ही इज़ नॉट रियली बैड। And he adds further, he's not really bad, but it's hard to make him part with his money. वो बुरा नहीं है, लेकिन ना उसको क्या ना अपने पैसे किसी को देने नहीं होते हैं. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I will go into Fritz and ask for him. एंड यू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. देखो, आप इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हो, अगर आप ये कपड़े पहन के फ्रिट्स के शॉप में जाके उसको बोलोगे तो उसको शक हो जाएगा लटकिन्स को कि आप पैसे मांगने हो. तो एक काम करो, आप मेरे पीछे छुप जाओ, मैं आगे जाके उसको फ्रिट्स को पूछता हूँ लटकिन्स के बारे में. Okay, further, I loved him for this. By myself, I might never had found Lutkins. So this lawyer was very much impressed by the hack driver. I'm so sorry. By the hack driver because he was so helpful. With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. तो उसको लॉयर को उस हैक ड्राइवर पे इतना विश्वास हो गया कि उसने बोल दिया कि मैं कोर्ट की तरफ से समन लाया हूँ लटकिन्स के लिए. ओके, आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिन्स that the man had refused to be witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise. तो तुम चिंता मत करो, हम उसको एक surprise देंगे. Let's start, driver. So lawyer says, let's start. Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking. सो उसने बोला ड्राइवर, लॉयर ने बोला ड्राइवर, तो वो बोला कि यहाँ पे मेरे दोस्त मुझे बिल या मैग्निसन के नाम से जानते हैं और मेरा बिजनेस है विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. मैं डिलीवरी का काम भी करता हूँ और हैकिंग का भी काम करता हूँ, तो आप मुझे बिल बुला सकते हो. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स? चलिए फ्रिट्स की तरफ. Okay, yes, Lutkins is just as likely to be out there as anywhere. Plays a lot of poker. He's good of deceiving people. Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. I'm so sorry. What happens? Bill says that हाँ, ये बंदा ना तो फ्रिट्स के शॉप में ही होगा, उसको पोकर खेलने का बहुत शौक है और लोगों को धोखा देने का शौक है. Deceiving people means to cheat on others. Okay, I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. So lawyer thought if this person, this hack driver Bill, would have been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully. बड़े आदर से उसको पकड़ लेता और जेल में डाल देता अगर वो पुलिस होता तो. Bill led me into Fritz. Okay, finally वो फ्रिट्स के शॉप में चले गए and this person, the hack driver, was leading and the lawyer was there behind. Have you seen Oliver Lutkins around today? तो उसने पूछा क्या तुमने देखा है फ्रिट्स, तुमने देखा है ऑलिवर लटकिन्स को आज से? So sorry, I'm not feeling well, so I'm yawning continuously, so please I'm sorry about that. Okay, so Oliver Lutkins, have you seen Oliver Lutkins today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. तो बिल बोला कि उसका दोस्त है, वो उसको ढूंढ रहा है. क्या आपने ऑलिवर लटकिन्स को देखा है? Fritz looked at me hiding behind Bill. So Fritz, that shopkeeper, he saw lawyer who was hiding behind Bill. He hesitated. थोड़ा सा कतरा के बोला. He hesitated and then admitted, yes, he was here a little while ago. I guess he's gone over to Gustav's to get a shave.
हाँ यहीं पे था, तो अभी तो था, मुझे लगता है वो गस्टव के शॉप में गया होगा शेविंग करने के लिए. ओके, सो वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. अगर वो आए तो उसको बोल देना मैं उसको ढूंढ रहा था. ओके, we drove to Gustav's barber shop, and both of them, they went to Gustav's barber shop. Again Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to, but if you find him you can just collect that $35 he owes me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. So both of them, the lawyer stood at the door of the barber shop, and Bill went inside. He went inside and he inquired Swede. Swede means people who belong to Sweden. So two Swedens were there. So one of them, he inquired, and one of them was very angry, and he said, I haven't seen him. मैंने भी उसे नहीं देखा है. I don't care to, और वो दिखे ना दिखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you find him, you can just collect that $35 ही ओज मी. उसके पास मेरे $35 है जो उसने मुझे देने हैं, उसने मुझे नहीं दिए. सो अगर वो मिले तो उसको याद दिलाना उसके बारे में. सो वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, दिस साइड ऑफ द होटल. सो वन ऑफ द कस्टमर्स ही सेड, हाँ yes आई हैव सीन हिम. ही हैड गॉन डाउन द स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, दिस साइड ऑफ द होटल. यू कैन सी वो वहाँ से ही गया है. As we climbed back into the hag, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for shave. लगता है लटकिंस ने इन दो स्वेडन्स को देख लिया और उसको उनके $35 चुकाने हैं, तो वहाँ से चुपके से वो भाग के दूसरे बार्बर के शॉप में चला गया. He might have gone to Gray's barber shop, okay, to shave. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left probably for the pool room. So as soon as both of them they reached Gray's the shop, there they missed him by 5 minutes, by only 5 minutes. 5 मिनट में देरी हो गई. 5 मिनट पहले वो बंदा वहीं पे था, वहाँ से भी गुल हो गया. And he might have gone to pool room. And the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. पूल रूम पे जाने के बाद उनको पता चला वहाँ पे उसने एक सिगरेट का पैक खरीदा और वहाँ से भी वो चला गया. सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. 1 बजे तक हम उसका पीछा करते रहे, जगह जगह ढूंढते रहे, बट वी डिडंट फाइंड हिम till 1 o'clock. Okay, I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. But this lawyer, he enjoyed his journey with Bill and his comments on his neighbors, and he didn't care whether he finds Lutkins or not. Okay, till here we are going to study. I hope you are enjoying finding Mr. Lutkins with Bill and this lawyer. So let us find out in our next video that whether the both of them they find Lutkins or not. Okay, so go through the lesson in the textbook and the summary in the refresher. Mark the difficult words and please note them down with the meanings in the notebook. And watch this video again and again. Leave your comments in the comment section. We'll find out in the next video. Till then, bye.